Namaskar दोस्तों, I am Purnima from Fertility Dost. I welcome you all to this very special session related to fallopian tubes. I think this is the first time we are discussing this topic on our live sessions. It's interesting to know that fallopian tube is a bridge between uterus and ovaries and often we forget this. हमें लगता है छोटी सी तो बात है, छोटी सी ट्यूब है, पतली सी ट्यूब है, इसका क्या काम? Believe me, this is the most important part in our reproductive system. छोटी है, पतली है, दिखती नहीं है, कहीं टीवी स्कैन में किसी उसमें हमें पता नहीं चलता, but believe me, this is the most important part. And so we are going to discuss about these things, especially the fallopian tubes, how we have to make sure that our tubes are working, our tubes are patent, and how they really help in natural conception. So to discuss this all, I just call Dr. Urshi on the screen. Hi, Purnima. Hello, good evening, ma'am. Good evening. So, viewers, let's welcome Dr. Urshi Iqbal from Kota. Yes, we have Dr. Urshi is the first doctor we are having from Kota. And thank you, ma'am. Thank you so much for joining us today. And Thank you, viewers, Purnima. Dr. Urshi is a director of Urshi Fertility and IVF Research Institute. And with her, we are going to talk about fallopian tubes. So please, viewers, start pouring your queries. First, we need to have some insight on this fallopian tubes. So, Dr. Arshi, just to have an insight on this topic, I know लोगों को बहुत knowledge है आजकल, but we really want you to throw some light. Is this really the important thing in our reproductive system, which we call fallopian tube? And what is the basic purpose of fallopian tubes in our reproductive system? Uh, Thanks, Purnima, for taking such a beautiful topic today because it is one of the most important concerns in infertility. If we see an infertility unit in a female genital system, so it consists of ovaries, fallopian tube, uterus. These are the main three parts where the patient can have some problem and they can have infertility in future. So I'll be skipping other parts like ovary and uterus. We'll not be discussing about that, but the prime important thing which is connecting the ovary, I mean the oocyte, which is bringing oocyte to the uterus, and a interlinking thing is fallopian tubes. So there are two fallopian tubes. The length of the fallopian tube is approximately 10 centimeters and it is divided into three parts mainly. So the outer third is a part which is responsible for fertilization, where the fertilizations occur after the fembrel and picks up the egg and oocyte. I'll be more technical, and then the sperm which is coming from the side of the uterus, they meet or they unite or they fertilize in this 1/3 portion of the fallopian tube. So the thing is, how much percentage of people, how common is fallopian tube affected if a person is having infertility? So let's see what are the basic causes of infertility in India. The first and prime cause of infertility if a patient is infertile is polycystic ovarian disease, which is the most common cause in India. So which one is the second most common? So second is fallopian tube. Either they may be blocked or they may be damaged, the hydrosalpinx, so any other thing which is there, some or the other thing affecting fallopian tube. So it is a second commonest thing which is happening to an infertile couple is a damage to a fallopian tube. So how common it is? Suppose there are 10 patients in my OPD who are infertile. So out of that, up to 3 or 4 patients must be suffering from fallopian tube damage or anything, blockage. It can be blockage, it can be something like because of ectopic the tubes are removed, because of PID they are having infection, because of tuberculosis they may be hydrosalpinx or something, so on and so forth. So the common thing what comes in the mind is what all are the symptoms and how can a person know
her fallopian tubes are not working or they are working properly. So there are basic. Let's talk about the investigations. Then we'll talk about other things. So the investigations which can tell us if a person is suffering from fallopian tube blockage, the first thing is the basic is HSG, which is hysterosalpingogram. There is other test also, HiCoSy and SSG, but what is the easiest way and the cheapest is reasonable costing investigation is hysterosalpingogram. The other gold standard test, suppose a person says, okay, no, she want 100% test and it should be diagnosed precisely, then the test is diagnostic histolaparoscopy, which is an operative procedure and which is a big procedure where the patient is given general anesthesia and the patient has operated and found out. But that is a gold standard. So every patient who is coming to our OPD, we cannot subject that person to hysterosalpingogram, to that diagnostic histolaparoscopy and operative procedure. So in that case, just to sort out things, we advise HSG. So out of 10 patients, if 9 patients are undergoing HSG, it is very easy to diagnose blocked tubes, or whether that patient in future needs diagnostic histolaparoscopy, which is in short form called DLH operation. So whether it is required or not, it comes and justified by it. If a person is having blocked tubes on HSG, definitely we can think about doing diagnostic histolaparoscopy. So HSG is a very small, precise. It takes hardly 15 minutes. It's a small procedure. It's an OPD procedure. And most of the patients who come to my OPD, they are scared of HSG. They feel the HSG is quite painful and this and that. Almost they have heard about from other co-patients or people that it is painful. But now what I say, if we do with proper technique and proper gadgets, which is a HSG catheter, you don't get pain. And there is not a single problem which patient face, or the terror of getting an HSG done is not there. Patients are very comfortable at it. The only thing is HSG cannula. And so after that, you come to know, people say, most of the reports which are saying it is patent or not. No. HSG says a lot about many things. It tells you the shape of the uterus. It tells you about the septum in the uterus. It tells you about the blockage from which point it is. Maybe it can be a corneal or familiar. It tells you about the patency, the caliber of the tube. So I rate it as a very important investigation tools. Secondly, then another thing is diagnostic histolaparoscopy. Definitely it is a gold standard, but cost wise it is a slightly expensive. So after diagnosing a patient whether it is having tubal block or not, the patient further proceeds. So as I'm in North India, so in North India tuberculosis is quite common. It's very, very common in North India. So the cause of tubal blockage mainly are two. First is tuberculosis, genital tuberculosis. Second is pelvic inflammatory disease. Pelvic inflammatory disease in a common layman's language is, जो एक महिला आएगी कहेगी क्या है, तो सफेद पानी की शिकायत. So सफेद पानी की शिकायत is very common and people have it for years and years. बहुत लंबे सालों तक चलता है. So a patient who comes and says कि she is having lot of white discharge, बहुत ज़्यादा सफेद पानी जाता है और बहुत सालों से जाता है, जब से ये लड़की थी जब से जाता है. So that can also lead to blockage of tubes. It can lead to flimsy adhesions which can deform the shape of the tubes, which can affect its patency. So this is a way. And PID is pelvic inflammatory disease. So white discharge is pelvic inflammatory disease and it can be due to various bacteria and viruses. So ultimately the damage is to the tube. Either it's mucosa or villi or anything can be damaged. Secondly, the genital tuberculosis. The people come and tell me, Madam, मैं तो इतनी मोटी हूँ, मुझे genital tuberculosis कैसे हो सकती है? So genital tuberculosis कैसे हो सकती है? Let me tell you. Genital tuberculosis is
मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस, इट स्प्रेड्स बाय ब्लड, खून के द्वारा जाती है। तो बचपन में कहीं कोई प्राइमरी फोकस अलग होता है, सपोज इन लंग्स या किसी और बॉडी के पार्ट में हुआ, और वो सेकेंडरी थ्रू ब्लड इट स्प्रेड्स टू ट्यूब। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द पेशेंट हैव सम और द अदर हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस। वो मुझे कहता है कि बचपन में पेट में मवाद पड़ गया था और ये निशान उसका पड़ा हुआ है, एंड इट हैज बीन ऑपरेटेड। So there is something in history also, and something in past also, the evidences are there, और the patient says कि है ना उसने है ना 9 महीने की या 6 महीने की ट्यूबरक्लोसिस की दवा खा रखी, then you start checking, and in this HSG you find corneal blockage, which is very common in tuberculosis. Corneal blockage is the point from where the tuberculosis start affecting the tube. So it is the point from where the uterus is connected with the fallopian tube. The junction जो ट्यूब का है यूट्रस के साथ, वहां से स्प्रेड होता है। सेकेंडली, इफ दिस ट्यूबरक्लोसिस इज लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय तक ट्यूबरक्लोसिस रही, तो वो उसमें हाइड्रोसेल्पिंग्स होता है। हाइड्रोसेल्पिंग्स का मतलब होता है कि जो ट्यूब है वो फूल के, जैसे ट्यूब एक सार नहीं होके वो फूल जाता है और उसके अंदर पस भर जाती है, तो वो इट बिकम्स डायलेटेड एंड टॉर्चुअस। सो दैट इज ऑल्सो अ सीक्वेली ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सो नाउ, क्या हर ट्यूब खुल नहीं सकता? क्या ट्यूबरक्लोसिस सही नहीं हो सकती? इन सब के जवाब मैं ट्रीटमेंट में दूंगी। सो अ पर्सन कम्स, आपने उसका डायग्नोसिस करा, और डायग्नोसिस के बाद आपको लगता है कि इसका ट्यूब बंद है, तो अब क्या करेंगे? ट्यूब बंद है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट मेथड्स? Now the treatment method depends upon age of the patient. If the patient is suppose in early 30s, 30 से कम, 30 साल से कम, और एक पेशेंट जो 30 साल से प्लस है, अपन दोनों तरह से देखेंगे। तो 30 साल का जो कम पेशेंट है उसमें सपोज आई फाइंड ट्यूबल ब्लॉकेज, so I should advise that patient दूरबीन का ऑपरेशन। दिस इज डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी विद ट्यूबल कैन्युलेशन, जिसके थ्रू हम उसको ये एडवाइस देते हैं कि आप दूरबीन का ऑपरेशन कराइए, अपन उसको खोलने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स इट इज़ वेरी इजी टू ओपन द ट्यूब। अब कई बार ये ट्यूब नहीं खुलता, लेकिन आप वहाँ पे देखते हो, आप आंखों से पूरा चीज़ दिखती है, आपको समझ में आता है ये ट्यूबरक्लोसिस है नहीं है। एंड नहीं भी खुले तो भी आप ये डिसाइड करते हो, इट इज़ द डॉक्टर हु डिसाइड्स बाय हिज एक्सपीरियंस और हर एक्सपीरियंस दैट शी कैन बी cured by starting a tubercular treatment or not, ये किस स्टेज में है। तो मैं अक्सर बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, इनफर्टिलिटी को लंबे समय तक बढ़ाना नहीं चाहिए। जो भी पेशेंट हैं, सपोज आई एम द पेशेंट, मेरे निरंतर 1 साल संबंध रखने के बाद भी मुझे बच्चा नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड ऑलवेज कंसल्ट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट। आप कैसे ये सोचते हो कि किसके पास जाएं, किसके पास नहीं जाएं? ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसने कहा वो डॉक्टर अच्छा है, उसने कहा वो डॉक्टर अच्छा है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज गो एंड फाइंड अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट, टू not to waste the time, because tuberculosis is a thing which can be treated if diagnosed in early stage. So एक ट्यूब है जो कि अर्ली स्टेज में, by treating her for 9 months you can get the tubes open completely, and ऐसे पेशेंटों में you don't even need to do IVF. Patient conceive by itself. The only important thing is the importance of duration of infertility, the right time to diagnose the things. So treatment point of view, so 30 years से लेस, आपने उसका DLH करा, आपने खोलने की ऑपरेशन करी, आपको लगता है ये दवा देनी चाहिए, पेशेंट खुल जाते हैं ना। 10 में से कम 6 पेशेंटों को सक्सेस मिलती है जस्ट बाय ट्रीटमेंट। एंड अब एक पेशेंट है जो 30 प्लस है, 35 प्लस है, वहाँ पे आपके पास उसका सबसे पहले फर्टिलिटी प्रोफाइल करना है। उसमें आप उसको AMH, उसका एंटल काउंट देखें, आप ये देखें कि वो अपनी इस एज में किस फर्टिलिटी स्टेटस पे खड़ा है, क्या उसके पास एडिक्वेट अंडे हैं, उसके पास क्या रुकने का टाइम है। अगर नहीं है, सपोज उसका AMH कम आ रहा है, उसका फर्टिलिटी एंटल काउंट कम आ रहा है, तो आप उसको IVF की सलाह देंगे। आप उसके ट्यूब खोलने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज ओपनिंग ट्यूब, डायग्नोसिंग, ओपनिंग एंड ट्रीटिंग, इट विल टेक अनदर 9 months to 12 months, and this will be very important period in a person who is 35 plus, so you cannot waste time, and there the thing of
comes for IVF. So इट्स रियली नाइस डॉक्टर अर्शी, बहुत बहुत बढ़िया सेशन रहा. नाइस टॉकिंग टू यू एंड same here, मैं उम्मीद करती हूँ Purnima. कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस सेशन से ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स लेके जाएं घर पे, जिससे वो अपनी अपने आसपास अपनी सोसाइटी सबकी हेल्प कर सकें. एंड व्यूअर्स, इफ़ यू हैव मिस्ड अ सेशन, डोंट वरी, ये सेशन यहीं पे इसी लिंक पे सेव रहेगा. आप बार बार इसको देख सकते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसको देख सुन समझ सके. एंड अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं किया है, देन प्लीज गो देयर एंड रजिस्टर. वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स फॉर यू एंड वीडियोस टू. So, Dr. Arshi, thank you so much for joining us. It's really, really wonderful talking to you. And I believe कि Same आप here. दोबारा भी आना चाहेंगी Oh, हमारे every पास. time I'm always ready. बोलना, I love speaking. I love sharing my knowledge. मे बी किसी के काम आएगी तो कोई मुझे दुआएं देगा तो वो मेरे बहुत काम आएंगी. Right, right, बिल्कुल. So I thank you, believe in Dr. destiny. Thank you so much. Bye, Thank Purnima. you. Bye. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more amazing videos on fertility. And to get your customized fertility coach program, visit www.fertilitydost.com.